There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about too much democracy. We saw too much of that this week. This is MLA of Sena. The way he is running, आप भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या किया जो आप भाग रहे हैं? कह सकते हैं कि शिवसेना टूट गई है? क्या ऐसा क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या? You can see that the MLAs are quiet. They are not speaking. They say Eknath Shinde will tell, but they have the majority. So these are the visuals. Sir, आपका नाम बताइए, पूरा नाम. Sir, आपके पास नंबर है? You can see these MLAs are literally being rescued inside the airport by Gujarat police. Yes, that's an NDTV reporter at Surat airport chasing Maharashtra's Shiv Sena MLAs who were taken to Surat and then were escorted by Gujarat police to be taken to Guwahati. Unity in diversity का मतलब ही बदल दिया इन लोगों ने. जहां महाराष्ट्र की महा अगाड़ी सरकार गिरी, वहीं अर्नब को माता चढ़ गई. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप God, that was loud, अर्नब. जो लोग ये शो हेडफोन्स लगा के सुन रहे हैं, kindly take them off unless you want to permanently damage your eardrums. Alisha is running towards the visuals. Alisha, yeah, over to you, can you hear me? Alisha is running, the visuals are there on the screen. Uddhav Thackeray has just left the Chief Minister's residence. Those visuals exclusively, yeah, we cut to it just a second late. Yeah, there we are. What would we do without Republic showing us exclusive visuals of their reporter running? Alisha, cut the chase. सुन तो लो पहले अपनी बॉस की. Alisha, can you hear me? Alisha, can you hear me? Niranjan, can you hear me? Niranjan. We can hear you. Finally, someone heard him. Thank you, Niranjan. It's over. He's going back, and I'm not sure he's coming back here anytime soon until the situation is Alisha is also there. Alisha is running behind the car. Alisha, आवाज आ रही है आपको? Don't need you, Niranjan. सबसे important बात है कि अलीशा को अर्नब की आवाज आई या नहीं आई अभी तक. Alisha reporting live. Alisha, the cavalcade is moving. Alisha, she can't hear me. She's too busy running after the cavalcade. She wants to get that soundbite out there. The moment that reporters are really waiting for it. Alisha is doing an amazing job out there. She's running with her mic and the camera person towards the car. She knows. That is what it takes to do an amazing job in Republic. Running with the camera and the mic towards the car. Tried and tested formula. Remember this? क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए. Now, in normal life, cut to the chase is a figure of speech. When someone is giving you long, convoluted, irrelevant information with no real purpose in sight, a commonly used figure of speech is, yaar, cut to the chase. Point kya hai? But at Republic, cut to the chase is not a figure of speech. It's quite literal. They really do cut to the chase. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा पांडे, न्यूज लॉन्ड्री से, और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्टिंग. मेघनाथ अमेजिंग रिपोर्टर से ग्राउंड रिपोर्टिंग से हमको एक्सक्लूसिव विजुअल्स ला रहा है. विजुअल्स आ रहे हैं. विजुअल्स ला रहा हूं. विजुअल्स. Cut the chase. Cut it. Now, it's been a very happening news week, politically speaking. And most channels want to give you the feels of all the drama that unfolded in Mumbai, Surat and Guwahati. Enter field reporters who are stationed by channels 24/7, quite literally. रात के करीब 2:13 हो रहे हैं और सूरत के ली मेरिडियन होटल के बाहर एक बार फिर हलचल हो गई है. जब तुम बेशरम न्यूज कंज्यूमर्स घोड़े बेच के सो रहे थे, तब एबीपी रिपोर्टर रात के 2:13 घोड़ों को चेज कर रहा था. You can call them horses, right? Horse trading. अब बस निकल रही है, वो बस जिसमें शिवसेना के बागी विधायक बैठे हुए हैं. ये देखिए, पुलिस का कॉन्वॉय, 3 पुलिस की गाड़ियां हैं और इन 3 पुलिस की गाड़ियों के पीछे एक बस है जिसमें शिवसेना के बागी विधायक और नेता हैं. ये देखिए, पुलिस की पहली वैन, पुलिस की दूसरी वैन, पुलिस की तीसरी वैन और उसके पीछे एक बड़ी बस है. एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी. एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं शिवसेना के नेताओं, कार्यकर्ताओं को जो कि निकल रहे हैं. हम इसमें से कुछ चेहरों को पहचानने की कोशिश करते हैं और सभी ने देखिए पर्दे लगा रखे हैं. कौन है ये पर्दे के पीछे छुपे विधायक? महाराष्ट्र के वैद्यकीय केस टीम के सदस्य हैं मंगेश चूटे, वो दिख रहे हैं. मंगेश देखिए, कुछ
विधायक हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये शिवसेना के विधायक हैं जो हंसते हुए आ रहे हैं और हंसकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हंसते हुए विधायक, साक्षात डेमोक्रेसी अपने वोटर्स की खिल्ली उड़ाते हुए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र? Eknath Shinde, a major Shiv Sena leader, broke away from the central leadership of the party. With him, he took more than 40 MLAs that were first shipped to a fancy hotel in Gujarat before being flown to a fancy hotel in Assam. If you think taking MLAs to Surat and then Guwahati is just a coincidence, read this. Guwahati was chosen because it is safer geographically and politically. First of all, the Northeast is not a region that has become a center for such political activities. It is not well connected with Maharashtra, which makes it difficult for the MLAs to go out of the state without the knowledge of the state administration. Surat is very close to Maharashtra, and the MVA leaders would have tried to reach out to them. इतना दिमाग तो ये सरकार बनाने में शायद नहीं लगाते होंगे जितना गिराने या तोड़ने में लगाते हैं. Best bit was this Osmanabad MLA Kailas Patil, who said that he was misled by Shinde gang. Kailas Patil has alleged after the Vidhan Parishad elections, he was asked to join Eknath Shinde for dinner. He went with Shinde's men thinking they were taking him to the dinner. But as the car went 40 kilometers ahead of Thane, Patil realized that something was amiss. He quickly asked the driver to stop the car, saying he wanted to attend to nature's call. अरे डिनर के चक्कर में खुद ही किडनैप हो गए. Anyway, किसी तरह भाग के विधायक जी 5 किलोमीटर रात के अंधेरे में बारिश में बाइक और ट्रक से हिचहाइक करते हुए घर को लौट आए उद्धव कैंप में. इस बहादुरी के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट चीफ बना दिया गया. Great story. I want to know who's buying it. But even better was this MLA who said that he was made to believe that he had a heart attack. On Tuesday, I was taken to a hospital in Surat by 20 to 25 people and police personnel. They said I had suffered a heart attack. But I never suffered any heart attack. My blood pressure also didn't shoot up. Their intention was wrong. I was given some injections forcibly. I really want to imagine this scene. विधायक जी, आपको हार्ट अटैक हो रहा है. काय पागल बाई कोण आहे रे ही पागल बाई काय काय बोलते आपको हार्ट अटैक हो रहा है. हार्ट अटैक काही नाही झालं ठीक आहे यार, हो रहा है हार्ट अटैक. अरे पण ठीक आहे मी ये देखो. काय हे काय Now, if you think this guy atop a bus was making fun of democracy, wait till you hear what this person had to say. We welcome all tourists to visit Assam now, as we need funds to deal with floods. In other news, more than 100 people have died in floods in Assam. Toll rises to 108. Situation remains critical in Silchar town. As of now, 30 out of the state's 35 districts have been categorized as flood affected. Such a mockery of democracy. And what do you have the fourth estate do? Take out that mighty pen and start counting who has how many MLAs on a whiteboard. इस वक्त मैं इस बोर्ड पर आपको नंबर गेम दिखाना चाहती हूँ. 35 + 3 यानी कि 38 नंबर हो जाएगा पूरा शिवसेना का. हमने आपके लिए पूरी स्थिति को बहुत आसान और सरल बना दिया है. तो ये वाला आंकड़ा यहाँ पर है. शिवसेना में बचे 20 और कुल बागी हो गए 35. 53 है एनसीपी के, कांग्रेस के 44. 144 का जो आंकड़ा है वो नहीं होता है. अल्पमत में आ सकती है उनकी सरकार. नंबर गेम का है. आंकड़ों की जो स्थिति है वो क्या है बता देते हैं आपको. पहली पार्टी, सबसे पहले हम लोग शिवसेना की बात करेंगे कि शिवसेना के पास कितने विधायक हैं मौजूदा वक्त में. शिवसेना के पास कुल मिलाकर के अपनी जो संख्या है वो 55 की संख्या, यानी कि यहाँ पर 2 विधायकों की अभी भी कमी है. अगर वो चाहते हैं कि दल बदल भी कर लें, पार्टी टूट भी जाए, उनकी जो सदस्यता है वो बची रह जाए, जिससे शिवसेना टूटने की संभावनाएं हैं, उसमें 2 विधायकों की कमी अभी एकनाथ शिंदे के पास कम. When news is beholden to government advertising, you can't really expect them to use that pen and that whiteboard to ask some real questions. Which is why we say when you need news to cater to public interest, you need to pay to keep news free. Go to newslaundry.com, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. Now, there is a lot of thinking that the Uddhav camp must do on why they lost the support of some Shiv Senics, possibly half of them. Was it too much secularism? And what can they do to win back the OG Hindutva tag that Shiv Sena always had? शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व
हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत. शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही. कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे. ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा उद्धव जी. यू हैव टू गो द होल हॉग. What Uddhav Thackeray needs to do in its next Twitter or social media post, he needs to say, Yogi ji, Yogi Gade, he needs to say hashtag Hindutva forever. And he should say Hindutva forever. Tweet it, says the anchor who himself doesn't have the courage to be on any social media platform because वहाँ पे direct questioning हो जाती है. उद्धव जी ने हिंदुत्व से दूरी बनाई, इसलिए उनकी कुर्सी पर बनाई. Time to take your headphones off again. गलती पर गलती और गलती पर गलती. पहली गलती है हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया. ये सबसे बड़ी गलती है उद्धव ठाकरे. इतना दुख तो बाला साहिब की आत्मा को भी नहीं हुआ होगा जितना दुख अर्नब और बाकी एंकर्स को हुआ ऑन उद्धव शेडिंग हिज हिंदुत्व टैग. बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सीट जितवाती है किसका सपोर्ट लेके? AIMIM का, जिस पार्टी के नाम में मुस्लिम है. और ये शिवसेना के अपने DNA से समझौता था. You really do know that Arnab is a showman though when you watch this. सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई, तब लोगों के जो गुस्सा थे लोग, उनको समझना जरूरी था. उनके जन भावना को उस समय नहीं समझा गया. इतने दिनों से Arnab had forgotten all about Sushant की हत्या. His death anniversary came and went and not even a primetime mention by Arnab. The moment he sees the political winds change, he resurrects a conspiracy theory to milk a tragic suicide yet again. What could be a more cynical use of a news event for TRPs than this? Meanwhile, the issue that was the top debating point of last week has all but disappeared from TV news. मैं बस अपना नजरिया बताना चाहती हूँ कि फौज में आने की पहली शर्त होती है देश के लिए प्यार और दूसरी शर्त होती है अनुशासन. इसलिए मैं मानती हूं कि अग्निपथ स्कीम के नाम पर हो रहे विरोध में हिंसा करने वाले सेना के काबिल हो ही नहीं सकते. आप भारत की सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हो और आप भारत को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? आपकी दिक्कत है, अधिकार है आपका सवाल पूछने का. मैंने कल भी कहा था अर्नब के तो शो का ही नाम है पूछता है भारत. और ये जो कहते हैं कि वो अप्लाई कर रहे थे, बच्चों से भरी बस पर पथराव कर सकते हैं. ये नाराज हैं और इन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है. इसलिए इन युवाओं को हम बस इतना कहेंगे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और अगर ये हिंसा को रोक देंगे तो फिर पुलिस भी इन पर लाठीचार्ज ना करे. मुझे लगता है कि वो आप बातें थी कि समझाया भी जाएगा और चेताया भी जाएगा, क्योंकि अगर आपको देश की रक्षा करनी है तो लूटपाट के तहत आप रक्षा कैसे करेंगे? But any proud Indian should be, because we want a military that is young, agile, dynamic, and makes room for those who want to serve for a limited duration. It is a scheme that India needs. It is a scheme that the tri-services stand for. And it is a scheme that all right-thinking Indians are very proud of. There can be nuanced critique, but there can never be violence. After lecturing Agniveers on how to behave, TV News has moved on to lecturing Uddhav Thackeray on how to manage his party. And that's news. We just saw violent protests last week. The country witnessed some terrible scenes. And TV News has just quickly moved on to the next topic as if nothing ever happened. What made the youth in India so angry? What were the underlying reasons for those protests? Unemployment coupled with historic inflation. A combination as bad as COVID and vaccine shortage. Or as bad as having diabetes with a heart disease. Or as bad as having Navika and RSS on the same channel. कुछ ज्यादा नहीं हो गया टाइम्स नाउ? बोनस में तुमने पद्मजा भी डाल दी. Anyway, back to what we were talking about. We're seeing unprecedented levels of unemployment in this country. Just take a look at some of these headlines. India has 53 million unemployed people as of December 2021, CMIE. India's unemployment rate rose to 7.83% in April, shows CMIE data. The unemployment rate in urban areas was higher at 9.22% compared to 8.28% in March. The data released on Monday showed.
India's job creation problem is morphing into a greater threat. A growing number of people are no longer even looking for work. Unemployment in India. Government in denial over a ticking time bomb. CMIE says 6.7 million people who lost their jobs in the aftermath of the pandemic have left the labor force, most probably in dejection of the lack of jobs. What links the burning trains in January to June? Lack of jobs. A staggering 1.25 crore candidates appeared for 35,281 vacancies. Salaried jobs are hardly growing. Government data explains the Agnipath anger of young Indians. Under fire over Agnipath, BJP's youth unemployment headache. Now, take a look at some of our Studio-Veers and how much time they dedicated to having shows on jobs and unemployment as a primetime issue of debate and discussion, reporting the Chhodi Do. The hardworking team of TV Newsance researchers looked at debates through some of our top channels. God bless them, and therapists helped them. They wanted to see how much time was dedicated to unemployment as an issue. Well, check out what they found. Sudhir Chaudhary, 0 shows on unemployment. Hindu Muslim, top पे. Navika Kumar, 0 shows. 4 debates तो यूक्रेन पे भी कर लिए. ऐश्वर्या कपूर, 0 shows. क्या पूछ रहा था भारत? मतलब रशिया पे 34 डिबेट्स कर लिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे 0. हमारे प्यारे अमीश जी, इन्होंने मर्यादा नहीं रखी क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम बहुत किया एंड 0 shows ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. हमारी प्यारी अंजना जी, 0 shows ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. पेपर कितने पढ़े होंगे? अर्नब गोस्वामी, 0 डिबेट्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो बट दे क्लियरली डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. हिंदू मुस्लिम बहुत करेंगे. सॉरी, हैड टू स्क्रीम दैट आउट. रूबिका, 0 shows on unemployment. Inflation पे भी 0. Thankfully, Ravish Kumar did 4 shows on unemployment. Wow. Think about it. The most important issue of our times, unemployment, gets no space on TV, while Hindu Muslim, so much space because advertisers. यार, इनके हिंदू मुस्लिम मोदी के चक्कर में टीवी न्यूज़ेंस भी बस हिंदू मुस्लिम मोदी का शो बन गया है. कुछ और करो यार, हमें भी थोड़ा सा वैरायटी दो. That's all the TV nuisance we have for you this week. I'm sure we will have to be back next week because ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं. And for too long, news media has been on top of the pyramid, commenting on everything from politics to judiciary to films to sports to even aliens. But their expectation is that no one should comment or question them. As long as you support us, it's our job to keep a watch on all pillars of democracy, and media should be one of them. So we will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, please like it, share it with your friends and families. Comment under the video. Tell us what you like and what you didn't like. Please keep your comments civil. And of course, please subscribe to newslaundry.com. Check out some of the other stuff we do at News Laundry, including a weekly podcast on news, a daily podcast on news, interviews, ground reports, and many other things. Log on to newslaundry.com, get familiar with a lot of other things that we do, and of course, subscribe. Pay to keep news free because it's only subscriptions that keep us going.